Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So we are discussing David Copperfield by Charles Dickens. So we'll be discussing summary themes and symbols from this famous novel by Dickens. So first of all we have characterization. So we have David Copperfield. So David is a boy जिसका जो childhood है वो shatter हुआ जब उसकी फादर की डेथ जो कि उसके पैदा होने से पहले ही हो जाती है, तो उसकी माँ एक बार यानी दोबारा शादी करती है और वो चीज़ें डेविड को बड़ा मेंटली हर्ट करती हैं. सो पेगोटे जो है इसकी मदर की एक सर्वेंट भी है और फ्रेंड भी है, और ऑन्ट बेस्टी ट्रोटवुड. सो ऑन्ट बेस्टी जो है ये इसकी बड़ी एक ड्राउनी किस्म की आंटी है डेविड की, जिससे वो खौफ खाता है. मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन यानी ये बहन भाई, ये इसका स्टेप फादर है और ये डेविड को बड़ा डिसलाइक करता है, बड़ा सख्तियां करता है. स्टीयरफोर्थ जो है ये डेविड का एडमायर्ड स्कूल फ्रेंड है, और ऊरिया ही एक स्नेक लाइक पर्सन है अपनी अपीयरेंस में और हर ऐसी जगह पे पंगे लेता है जहां पे उसे पंगे नहीं लेने चाहिए. एंड एग्नेस इज सिस्टर लाइक फ्रेंड टू डेविड, जिसके ऊपर वो भरोसा करता है और जिससे उसकी दोस्ती है. Okay, ji. So, story starts when David is already a grown-up man and he tells the story of his youth. So, young boy के तौर पे ही वो अपनी माँ के साथ और अपनी nurse Pagotry के साथ he was living happily. His father had already died before he was born. So, early childhood में जो उसकी mother ने जब दूसरी शादी की Mr. Murdstone से, who brings his strict sister as well, जो कि मिस मर्डस्टोन है और वो भी बड़ी जालिम किस्म की खातून है. तो वो बड़ा बुरा तरीके से ट्रीट करते थे डेविड को, क्रूअली ट्रीट करते थे. तो डेविड ने मतलब मिस्टर मर्डस्टोन के हाथ पे बाइट कर लिया जब वो उससे मार रहा था. सो उसके बाद मर्डस्टोन्स यानी भाई बहन ने मिलके इसको भेज दिया एक स्कूल में, यानी घर से एक तरह से निकाल दिया. सो पैगोट्री जो है वो डेविड को लेके जाती है फैमिली को विजिट करने के लिए यामार्थ में, जहाँ पे डेविड पैगोट्री के ब्रदर से मिलता है, यानी अपनी फैमिली से मिलने जाती है तो साथ डेविड को भी ले जाती है. सो वो पैगोट्री के ब्रदर से मिलता है मिस्टर पैगोट्री और उसके दो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैम एंड लिटिल एमिली. सो मिस्टर पैगोट्री की फैमिली जो है वो एक बोट के अंदर रहती है जो कि उल्टी हुई है, और यहाँ पे वो मिसेस गमिज के साथ शेयर करते हैं इसे, और वो मिस्टर पैगोट्री के ब्रदर की विडो है. और इस विजिट के बाद डेविड स्कूल को अटेंड करता है सैलम हाउस में, जो कि एक मिस्टर क्रिकल नामी आदमी उससे चलाता है. डेविड जो है वहाँ पे जेम्स स्टीयरफोर्ड जो है उसके साथ दोस्ती कर लेता है, जो कि वहाँ पे एक बड़ा ईगोटिस्टिकल किस्म का पर्सन है. डेविड की वहाँ पे टॉमी फ्रेडल्स के साथ भी दोस्ती हो जाती है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट फैट बॉय है और जिसे स्कूल में ज्यादा मारपीट का निशाना बनाया जाता है. डेविड की मदर की डेथ हो जाती है एंड डेविड कम्स बैक होम वेयर मर्डस्टोन नेग्लेक्ट्स हिम. ही वर्क्स एट मर्डस्टोन्स वाइन बॉटलिंग बिजनेस. सो उसके साथ वाइन बॉटलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है एंड मूव्स इन विद मिस्टर मैकाबे जो मिसमैनेज करता है फाइनेंसेस को. जब वो उससे मिस्टर मैकाबे लंदन को छोड़ के जाता है अपने क्रेडिटर्स से बचने के लिए, क्योंकि फाइनेंसेस का बेड़ा गर्क कर चुका होता है वो. सो डेविड मीनवाइल वो डिसाइड करता है अपने फादर की सिस्टर मिस बेस्टी ट्रॉटवुड को ढूंढने का. सो शी इज द ओनली लिविंग रिलेटिव ही हैज. He walks for a long distance to Miss Betsy's home, और वो उसको एक अपने मेंटली अनस्टेबल फ्रेंड की एडवाइस पे घर के अंदर बुला लेती है. She sends David to school run by a man named Dr. Strong, और David उसके बाद he moves in with Mr. Wickfield and his daughter Agnes जब वो स्कूल में होता है. So Agnes और डेविड बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और विकफील्ड बोर्डर्स जो उस घर रह रहे होते हैं यानी बोर्डिंग हाउस में, उसमें यूरिया हीप भी होता है जो कि स्नेक लाइक यंग मैन है who often involves himself in the matters of others where he should not have involved himself. तो डेविड ग्रेजुएट करता है वहां से and goes to Yarmouth to visit Pagotry, who is now married to Mr. Barkis, the courier.
as David reflects on what profession he should pursue. So वो सोच रहा था कि मैं आगे फ्यूचर में ग्रेजुएशन तो मैंने कर ली, अब मैं कौन सा प्रोफेशन लेके चलूं. On his way to Yarmouth, David encounters James Steerforth, and they take a detour to visit Steerforth's mother. They arrive in Yarmouth, where Steerforth and Pagotry become fond of each other. So Pagotis जो होते हैं और वो Steerforth ये दूसरे के बड़े करीब आ जाते हैं, यानी वो फैमिली जो है. And when they return from Yarmouth, Miss Betsy persuades David to pursue a career as a proctor or kind of a lawyer. David जो है अपने आप को अप्रेंटिस के तौर पे रखता है स्पैनलो और जॉकिंस के पास, और वहाँ पे लॉजिंग उसकी होती है मिसेस क्रप नामी खातून के घर पे. अप्रेंटिस होता है बेसिकली जब आप किसी के पास काम सीखने के लिए कुछ टाइम गुजारते हैं. सो स्पैनलो इनवाइट करता है डेविड को टू हिज हाउस फॉर अ वीकेंड. There David meets Spanlow's daughter Dora and quickly falls in love with her, just like a common boy. जैसे ही कोई खातून देखी अच्छी प्यार हो गया. So in London, David is reunited with Tommy Treadles and Mr. Macabre. Word reaches David through Steerforth that Mr. Barkis is terminally ill. Mr. Barkis जो है वो बीमार है, वो ultimately will die. डेविड जाता है यामाउथ टू विजिट पैगोट्री इन हर आवर ऑफ नीड, उसकी मदद के लिए. लिटिल एमिली एंड हैम, नाउ एंगेज्ड, आर टू बी मैरिड अपॉन मिस्टर बार्किस डेथ. इनकी मंगनी होनी होती है और शादी होनी होती है, बेसिकली मंगनी हो चुकी है. डेविड हाउएवर फाइंड्स लिटिल एमिली अपसेट ओवर हर impending marriage. वो उसे लगता है कि वो खुश नहीं है. When Mr. Barkis dies, little Emily runs off with Steerforth, who she believes will make him a lady. So वो उसके साथ भाग जाती है और Mr. Pagotry devastate हो जाता है, but vows to find Emily and bring her home, कि वो उसको लेके आएगा. Miss Betsy visit करती है लंदन का to inform David that her financial security has been ruined because Mr. Wickfield has joined into partnership with Uriah Heep. Or David, who has become increasingly infatuated with Dora, wills to work as hard as he can to make their life together possible. Mrs. Spanlow, however, forbids Dora from marrying David क्योंकि वो कहता है कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है. Mr. Spanlow dies in a carriage accident that night, and Dora goes to live with her two aunts. Meanwhile, Uriah Heep informs Dr. Strong that he suspects Dr. Strong's wife, Annie, of having an affair with her young cousin Jack Maldon. ये जो थे विक्टोरियन नॉवेल्स की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे. So finally Dora and David marry, and Dora proves a terrible housewife, incompetent in chores, so David loves her anyway and is generally happy. Mr. Dick facilitates a reconciliation between Dr. Strong and Annie, who was not in fact cheating on her husband. ये misunderstanding होती है. So Mr. Dartle, Mr. Steerforth जो ward होती है उसकी summons David and informs him that Steerforth has left little Emily और कि उसने उसको छोड़ दिया. Miss Dartle adds that Steerforth's servant Littimer has proposed to her and little Emily has run away. David and Mr. Pagotry enlist the help of little Emily's childhood friend Martha, who locates little Emily and brings Mr. Pagotry to her. Little Emily and Mr. Pagotry decide to move on to Australia and do the Macabers, who first save the day for Agnes and Miss Betsy by exposing Uriah's Heap fraud against Mr. Wickfield. So he eventually ends up frauding with them. A powerful storm hits Yarmouth and kills Ham while he attempts to rescue a shipwrecked sailor. The sailor turns out to be Steerforth. So meanwhile Dora falls ill and dies, and David जो है he leaves the country to travel abroad. His love for Agnes grows. When David returns, he and Agnes, who has strong, harbored a secret love for him, get married and have several children. David pursues his writing career with increasingly commercial success. So here the novel ends basically. So
there were so many ups and downs in the novel, as we see. So the theme is of coming of age and personal development with reference to David. Then ambition, social mobility and morality, they're paying very good attention or very good influence on the novel. And then we have memory and nostalgia, that most of the characters they kept thinking about their past. And also when the novel starts, David is an older person who is thinking about his youth now. Womanhood and gender roles, we are told about the plight of women in those times and how a woman had to survive in the society. Home and family, which David was lacking, and so were so many other characters that they were lacking too. Okay, so इसमें हमारे पास जो symbols हैं उसमें the sea is a symbol of depth, of agony, of pressure, of like something that is hurting. So हम इसमें देखते हैं कि समुंदर जो है उसमें काफ़ी उसका तूफान, उसके नुकसानात, उसकी तबाही वो बड़ा ज़्यादा कुछ represent कर रही है इस नॉवल के अंदर. हैम की डेथ होती है इसी हवाले से, और समुंदर एक बड़ी फियर्स किस्म की फोर्स दिखाई गई विच इज़ लाइफ गवर्निंग फोर्स बेसिकली. फ्लावर्स आर सिंबल ऑफ इनोसेंस, जो कि हमें नज़र आता है डेविड कॉपरफील्ड के अंदर. एग्नेस के अंदर ये जो इनोसेंस है वो फ्लावर्स के ज़रिए है. सो फ्लावर्स इनोसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड देन वी हैव मिस्टर डिक्स काइट, जो कि उससे मेंटली अनस्टेबल होता है मिस्टर डिक, लेकिन उसकी जो काइट है दैट रिप्रेजेंट्स के दैट कीप्स हिम अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल. सो ही फाइंड्स हिमसेल्फ mentally or physically aloof or at a distance with them. So basically ये important symbols हैं from David Copperfield. Thank you very much.